आगे टॉपिक है, न्यू चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर नंबर 12 एटम्स। ये तुमने केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ा हुआ है। डाल्टन ने बताया था कि किसी भी मटेरियल का सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है, सबसे लास्ट, वो है एटम। और एटम जो है वो इनडिविजिबल है, उसको हम तोड़ नहीं सकते, वो लास्ट है, लास्ट लिमिट एटम की। ये डाल्टन की थियरी के हिसाब से था। लेकिन बाद में एक्सपेरिमेंट्स बता रहे थे कि एटम के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाहर निकल रही हैं। एटम के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर निकल रही है। तो क्वेश्चन ये आया कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर निकल रही हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब एटम के अंदर से अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाहर आ रही है, तो इसका मतलब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एटम डिविजिबल है, उसको हम अलग कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। फिर बाद में एटम को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे मॉडल आए। सबसे पहला मॉडल आया था थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल, उसको बोलते हैं थॉमसन्स वाटरमेलन मॉडल। उसने कहा था कि एटम जो है ना, एक स्फीयर है पूरे पॉजिटिव चार्ज का। एटम एक स्फीयर है पूरे पॉजिटिव चार्ज का, और उसके बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अरेंज हैं। एटम पूरा स्फीयर किसका है? पॉजिटिव चार्ज का, और उसके बीच में इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज अलग अलग जगह पे भरे हुए हैं। जैसे कि वाटरमेलन में होता है कि अंदर जो रेड कलर का होता है, उसको हम पल्प बोलते हैं, वो पूरा पॉजिटिव चार्ज है, और जो सीड्स है ब्लैक कलर के, इट इज नॉट नेगेटिव चार्ज। ये थॉमसन्स का मॉडल है। तो एक बार हम थॉमसन्स का मॉडल देख लें, एक सेकेंड। एक बार ये मॉडल देख लो। स्क्रीन दिख रही है सबको? एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, इस सवाल का जवाब स्क्रीन नहीं क्लियर? Yes, sir. In this module, you will learn about Thomson's atomic model. Are the charged particles arranged in any particular manner? Are the charged particles spread throughout the atom, or are they concentrated in one place? To answer these questions, let's go back in time. Dalton's atomic theory stated that an atom was indivisible and indestructible. However, in 1886, Goldstein came upon positively charged radiations in a gas discharge, which he termed as canal rays. These radiations led to the discovery of the proton. The mass of a proton was about 2000 times that of an electron, and it carried a positive charge.
Around the year 1900, J. Thomson conducted experiments on the beams of particles inside a glass tube called a cathode ray tube. He found that the particles were attracted to the positive terminal of the tube. Thomson concluded that the particles must be negatively charged and called these particles electrons. An electron has a negligible mass and has a charge of -1. These discoveries made the scientists believe that an atom was divisible and made up of electrons and protons. What they didn't know at the time was how these electrons and protons were arranged within an atom. They tried to understand this arrangement through various experiments. J. Thomson was the first to put forward a model to explain the structure of an atom. In his model, Thomson compared an atom to a Christmas pudding. The electrons were like the raisins in the pudding, and the pudding itself was like the positively charged particles. This can also be explained through the example of a watermelon. The positive charge in the atom is spread all over like the red, fleshy part of the watermelon, while the electrons are embedded into the atoms like the seeds of the watermelon. The oppositely charged particles are held together by electrical force of attraction. Thomson concluded that an atom consists of a positively charged sphere with electrons set within the sphere. An atom is electrically neutral as the positive and negative charges within it are equal. As per Thomson's conclusion, the electrons were embedded in a sphere of positive charge. This conclusion, however, was incorrect. Thomson asserted that the positive charge spread through the atom held the negatively charged electrons due to electrical forces. मॉडल समझ में आया सबको? यस सर। क्वेश्चन ये था कि इसका मॉडल रॉन्ग हुआ। रॉन्ग इसलिए हुआ, इसने कहा भाई पूरा स्फीयर पॉजिटिव चार्ज का है और इलेक्ट्रॉन बीच बीच में है। तो जब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में आसपास होते हैं तो वो कभी भी स्टेबल नहीं रहते, क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स रहता है और उस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के अंदर एक्सेलरेटेड मोशन करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड मोशन करते हैं तो कोई भी चार्ज जब एक्सेलरेटेड मोशन करता है तो अपने अंदर से कंटिन्यूसली रेडिएशन एमिट करता है, कंटिन्यूसली। इसका मतलब ये हुआ कि अगर थॉमसन मॉडल सही है तो रेडिएशन कंटिन्यूसली बाहर आनी चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट बताते हैं रेडिएशन कंटिन्यूसली बाहर नहीं आती। इसका सिंपल मीनिंग ये हुआ कि थॉमसन का जो मॉडल है वो रॉन्ग है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। थॉमसन गलत हो गया तो सिंपल बात है, क्वेश्चन अब वहीं का वही कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अरेंज कैसे हैं वो हमें पता नहीं है। तो उस वक्त एक और साइंटिस्ट आया, तुमने शायद नाम सुना होगा, रदरफोर्ड। Rutherford. गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट याद है? उसने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे अरेंज्ड है, कौन से प्लेस पे अरेंज है। गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट याद है सबको? क्या क्या था उसमें? बीच में तो गोल्ड फॉइल थी, इसने अल्फा पार्टिकल जो है वो गोल्ड फॉइल के ऊपर बॉम्बार्ड किए और अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड फॉइल पे अंदर गई तो वहां से जाने के बाद अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड हुई, और वो जो अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड हुई उस स्कैटरिंग से हमको पता चला कि गोल्ड फॉइल के न्यूक्लियस में मतलब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल खुद पॉजिटिव था
अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, एटम के अंदर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्जन होता है। तो अल्फा पार्टिकल जहां भी स्कैटर्ड होगा उसका रीजन क्या होगा? एटम के अंदर का पॉजिटिव चार्ज। तो स्कैटरिंग से हमको ये पता चला कि पॉजिटिव चार्ज एटम में कहाँ कहाँ है। उसका एक बार रिकैप भी देख लेते हैं, एक सेकेंड। क्या बताऊं सर आपको। अच्छा सर ये देखिए, ऐसा पार्किंग आपको कहीं नहीं मिलेगा सर। पसंद आया? Look into the details of the alpha particle. स्क्रीन देखिए बेटा, स्क्रीन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. मैं देख लो। Rutherford's model of an atom. In this module, you will learn about Rutherford's model of an atom. A number of scientists worked on the structure of an atom. One of the first scientists was Sir J.J. Thomson, but his model could not explain the results of several experiments. One of those experiments which could not justify the Thomson model was done by Rutherford. Rutherford's experiment got popular by the name of alpha particle scattering experiment. To understand about his experiment, let us first see what alpha particles are. Alpha particles are emitted by radioactive substances. These are helium ions with double positive charge. Now let us look into the details of the alpha particle scattering experiment. The setup of the experiment consisted of a thick lead box with a hole on one of its walls, a slit, a thin gold foil, and a rotating detector at the end. Inside the lead box, a radioactive substance rich in alpha particles was kept. Now, let us see the experiment. Alpha particles emitted from the radioactive source passed through the hole and entered into the slit to get streamlined. The thin streams of the particles then bombarded the gold foil and got scattered in different directions. Their scattering pattern was shown by the detector. It was expected from the Thomson model that it should show a large number of deflections. But something else was observed actually. The detector showed that most of the alpha particles passed through the gold foil as such without showing any deflection. Only a few of them showed deflection in different directions. A very few of them, essentially 1 in 12,000, rebounded back. Such observations led to significant conclusions. Let us see what those were. As most of the particles passed undeflected, Rutherford concluded that most of the space inside a gold atom was empty. A few particles were deflected from their path by small angles, indicating that there must be a positively charged center, which was repelling alpha particles. As these particles were few in number, this led to the conclusion that a positively charged center occupies a tiny space. The few particles that are rebounded back indicate that all the positive charge of the atom was concentrated in a very small volume in the center. Rutherford named this positive center of the atom as a nucleus. Looking at the proportion of the particles undeflected, deflected, and rebounded, and based upon some calculations, Rutherford concluded that most of the mass of an atom is concentrated in its nucleus. Based on all these conclusions, Rutherford suggested an atomic model, which was known as the nuclear model of atom. According to Rutherford's nuclear model, there is a positively charged center in an atom called nucleus.
and all the mass of the atom is due to this nucleus. It also suggested that electrons of the atom revolve around its nucleus. This model was also known as planetary model, as the nucleus of the atom can be compared to a miniature sun, and electrons revolving around the nucleus can be compared to the planets revolving around the sun. But this model did not get much acceptance, as it said that the electron keeps revolving around the nucleus. However, later it was found that any charged body while moving in a circular motion undergoes acceleration. On undergoing acceleration, it should use some energy. So the energy of the electrons should keep decreasing. As a result, the path in which the electron is moving should keep becoming smaller, and thus, finally, it should fall into the nucleus, and hence the atom should collapse. So, the nuclear model could not explain the stability of the atom, and this was its major drawback. Let's recap. Rutherford gave a nuclear model of an atom which was based on his alpha particle scattering experiment. According to the Rutherford's model of an atom, all the positive charge and mass of an atom is concentrated at the center. The center of an atom is called the nucleus. The size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. The electrons of an atom revolve around the nucleus. The major drawback of this model was that it could not explain the stability of the atom. क्लियर हुई बात सबको? Yes, sir. उसका मेजर ड्रॉबैक क्या था? वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि न्यूक्लियस के आसपास जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो वो किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं वो इसने एक्सप्लेन नहीं किया था। सिर्फ ये अच्छे से ये बता पाया था कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है। तो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है? बहुत ही छोटी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको हमने नाम दिया था न्यूक्लियस, और पूरा का पूरा मास वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है। आसपास का पूरा स्पेस जो है वो खाली है। समझ में आई सबको बात बेटा? क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये याद रखना, रुदरफोर्ड भी शायद तुम्हारा कैंसिल है। एक बार तुम्हारे पास है किसी के पास लिस्ट कौन सा टॉपिक कैंसिल है? हाँ सर, एक मिनट। एक मिनट, रुदरफोर्ड है कि नहीं है? हाँ सर, कैंसिल है। कैंसिल है ना? जस्ट नॉलेज के लिए मैंने तुम्हें बताया, रुदरफोर्ड भी तुम्हारा कैंसिल ना। थॉमसन है ना, रुदरफोर्ड है ना, ही इससे पहले डेविसन गर्मन था। थियोरी में नहीं है, लेकिन तुम्हें पढ़ना तो है अच्छे से, ठीक है? किसी को डाउट? बढ़े आगे? No, sir. तो मैं लिंक बंद करता हूँ, लिंक पे क्लिक करके वापस आ जाओ।